परिवर्तन मस्तिष्क की ओर से हृदय की तरफ आना, इस रास्ते से नहीं तो हृदय की तरफ से मस्तिष्क की तरफ जाना, ये। However, such episodes did not deter the mission. The resilience and conviction of the cadre kept up the pace of the movement. क्योंकि बामसेफ में जब जब टूट हुआ है, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें निराशा नहीं हुई, कंटेस्ट हुआ। इस मतलब विचारधारा डिमांड है समाज में। The ideological homogeneity brought many such individuals back to the platoon. Now, as far as the people coming back to the organization, see, people realize at the different stages. Now, who realizes this? The person who is still committed to the objective, he keeps on thinking. When he keeps on thinking, he gets a feeling, no, what I have taken a view at a particular point of time, that was not correct. The strength of conviction and resilience of the cadres can be best observed when they make the movement a way of life. Making several adjustments, both professional and familial, they have been marching ahead to fulfill the mission. तो कांशीराम ने भी प्रॉमिस किया था, वो मेरे को बता रहा था कि मैं प्रॉमिस किया, मैं फैमिली नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, है, और मैं कोई और एक्टिविटी नहीं करूंगा, सिर्फ जे बामसेफ बनाने के लिए काम करूंगा। I have seen the dedication of Mr. Khapade. Every Saturday and Sunday, he used to go for the field work. And when he used to come back on Monday morning, he was not having his full sleep. खापड़े साहब का ऐसा नहीं, जो मिलेगा वो खाने का। उन्होंने देखो अभी तक वो बीमार गिरे फिर भी जो है वो हिसाब लिख के रखते थे अपने डायरी में। उन्होंने कभी सफरचंद लाके खाया नहीं, कभी केला लेके खाया नहीं। उन्होंने क्या, वो पछता नहीं था, वो भी बताया नहीं कि मुझे कुछ बीमारी है कर, उन्होंने वो भी नहीं देखा। वो क्या काकड़ी लेके आते थे, काकड़ी खाते थे, और जो घर में बचा उचा जो खाने का रहे वो खाने का, बैग पकड़ने का, निकालने का। खापड़े साहब की जो एज थी 55 से 60 की एज में, वो दो हाथ में जो उसकी बैग उठाते थे, उस बैग में कम से कम 30-30 किलो का वेट होता था। क्योंकि एक दो बार मैंने उठाई थी तो मुझे पता है। तो वो 30-30 किलो की बैग लेके पूरे भारत भ्रमण घूमते थे। तब हमें ऐसा होता था कि अरे ये आदमी इतना समाज के लिए कर रहा है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये प्रेरणा ये गुजरात के कार्यकर्ताओं को मिली खापड़े साहब से। 3-3 महीने में आते थे, क्या कपड़े लेके धोने के लिए, डालने के लिए। रोल मॉडल्स वर बिफोर मी, कांशीराम साहब, खापड़े साहब, कि दोज हु आर enthusiastic, they must pay for their enthusiasm. And those who are more enthusiastic, they must pay more for their enthusiasm. ऐसा उन्होंने ये बनाया था। Then I was asked to take voluntary retirement. So I considered it is my responsibility. और इसीलिए मैंने इसको मतलब प्रायोरिटी दी। B.D. Borkar postponed his marriage for 4 years at the instance of कांशीराम जी। बामसेफ की वर्तमान की उस समय की लीडरशिप थी, वो इंस्पायरेशन मिलने से ही संगठन बना ना। लेकिन जो उद्देश्य लेके वो चले और उद्देश्य की कमिटमेंट उनके साथ में रही, उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके पूरा उन्होंने जीवन बलिदान किया, उससे लोगों को इंस्पायरेशन मिला। मान्यवर खापर्डे जी वो कहा करते थे कि हमारा बामसेफ का कार्यकर्ता एक पागल मैड जैसा होना चाहिए, एक मैड जैसा होना चाहिए कि वो उसी में पागल रहे, उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और सचमुच जो है हमारे कार्यकर्ता पागल हो के हिसाब से काम करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये काम दिया गया है, ये एरिया हमारा है, ये काम दिया है, ये काम को हम किसी भी तरह से अंजाम देने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फैमिली किधर जाती है वो उसका सवाल नहीं है, कौन किधर जाता है उसका कोई सवाल नहीं। There is no parallel to the sacrifice of these persons.
म्हणजे their time, energy, money, family life and the life of his children, wife, everything they sacrificed for the sake of this organization. मेरी आज उम्र 76 है, तो भी मेरे शक्ति के अनुसार, मेरे प्रयास के अनुसार मैं काम करता हूँ, आज भी करता हूँ और भी करते रहूँ। मैं उस लाइन में नहीं लगना चाहता जिसमें बाबा साहब ने ये कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं उस लाइन में नहीं लगना चाहता। मैंने अपने जीवन में कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया, मात्र एंड मात्र मैं बामसेफ के साथ ही रहा और रहूँगा भी। मिशन के साथ जुड़े हैं, मिशन के संस्थागत चरित्र में विश्वास करते हैं और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब मेरी 73 एज है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी अगर कभी भी रात हो दिन हो, अगर कभी भी कोई मैसेज दे तो मैं कभी मना नहीं करता कि मैं नहीं आ सकता। मुझे लग रहा था क्योंकि बामसेफ शायद हमें खोज रहे थे और मैं बामसेफ खोज रहा था और सलामा अधिवेशन ने दोनों को एक जगह मिला दिया। तो मैं बेसिकली पहला अधिवेशन में ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं चाहता हूं कि इसमें फुल टाइम काम करूं। When Kabir Sahab died, he left. It was very shocking news for us. At that time, we 5 people declared that we will going to be we will work as a full time. Without making a formal appointment, we were considered as full timers. We were impressed that the BAMCEF organization is doing for the backward classes, minorities and all that. They are uniting all the employees of the SC, STs and OBCs. So we were impressed by that very aim of the organization. So we were friendly with BAMCEF. Regarding this BAMCEF, it has succeeded in mobilizing the educated and well-settled section of the community. It is a victory. పూలే గాని అంబేడ్కర్ గాని ఈ సమాజం గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. బ్రాహ్మణిజంలో ఓ విషం తప్ప నిజం లేదు, ఈ బ్రాహ్మణిజంలో ఓ విషం తప్ప నిజం లేదు. అంబేడ్కర్ ఎక్కడ నీ లెక్క తీసి అడుగుతావు, దిక్కులేని గుండెల్లో దీపమై వెలుగుతుండు. BAMCEF is a very major ideological network. This is one organization which has a very fundamental philosophy of Mulwasi concept. In my view, it has to deploy the intellectual resources on a lot of areas, in scientific fields, in academic fields, in mass movements. BAMCEF has to educate first our people and then the society in general. And this work is being done by BAMCEF according to me. Therefore, I was also impressed. I would congratulate the organization, firstly because it has made conscious the backward classes of their traditional enemies. That kind of awareness among the people that they have to unite if they want to go ahead has been created by this organization. I also have been very impressed that BAMCEF approaches the challenges facing India in a very considered manner, building on the deep insights and profound ideology of Dr. B.R. Ambedkar to contemporary society. And I think that's an extremely valuable and important function that BAMCEF plays. BAMCEF एक ब्रिजिंग फोर्स बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. BAMCEF के कैंप्स में मैंने देखा है कि अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोग साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ बैठते हैं. तो BAMCEF ने एक बहुत बड़ा काम किया है राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने में.
और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया संदेश दे रहा है। Three decades into the movement, BAMCEF is now being passed on from the founders' generation to the propagators' generation. You cannot achieve the objective of your organization which you have set during your lifetime. We started with the building of BAMCEF organization 25 years back. Our source of inspiration was that Dr. Ambedkar was having some big expectations from the educated class. As Dr. Ambedkar during his days, he has clearly mentioned, approved Brahmanism, the spirit of inequality. We had accepted that as our task for coming next, I would say, another 25 years. And therefore, you need the person to join the organization. The old generation people are there to guide. In a caste-ridden society, naturally, the educated youth has to play a very vital role and a positive role in bringing the necessary cultural change also. At present, due to the global economic forces, the sovereignty of the state is thwarted. Economy and polity is being controlled by the Brahmanical so-called private players, leaving Mulnivasi Bahujans deprived of resources and power, pushing them into a new kind of slavery. Unfortunately, the younger generation, which is relegated to seek employment in this so-called private sector, is failing to realize the necessity to involve themselves in the Ambedkarite movement. So, we have to convince the new generation that they have been benefited from the movement of Ambedkar, directly or indirectly. एक समय था कि मैं कभी दो शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन बामसेफ ने मुझे बोलना सिखाया है, सही बात को सही कहना सिखाया है, गलत को गलत, ठीक को ठीक समझने की सूझबूझ बामसेफ ने मुझे दी है। और जो मेरे नए जो आने वाली जो जनरेशन है, मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को, हर परिवार के बच्चे को बामसेफ के साथ जोड़ना है। अगर उसके अंदर वास्तव में एक व्यक्तित्व को निखार करना है, व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी को उभारना है और उसकी सोच को पॉजिटिव अगर बनाना है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और एक एनालिटिकल जो माइंड अगर उसका डेवलप करना है तो बामसेफ उसके लिए बहुत सही है। ये कैरेक्टर का मीनिंग हमारे लोग नहीं समझ पाए आज की तारीख में, तो हमारे लोग केवल किसी के साथ नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, यही अच्छा कैरेक्टर समझते हैं। ये सोशल कैरेक्टर हमारे लोगों को नहीं समझा, और जब तक ये नहीं समझेगा तब तक कोई भी कारवा आंदोलन का सामने नहीं बढ़ सकता। Quite a good number of young cadres are involved in the mission. However, it requires many more to match our efforts equal to the task. क्योंकि जब हम लोग बामसेफ में क्रांति का काम कर रहे हैं तो हमारे ही इसमें हयात में क्रांति होगी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये काम करते हुए हम दूसरे जनरेशन को भी ये हैंड ओवर करें। అంటే ఈ సొసైటీలో రెండు గ్రూపులు ఉండాలి ఫైట్ చేయాలంటే, అంటే ఆ గ్రూపులు అనేది రెండు గ్రూపులు, ఒకటి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వలన ఎవరైతే లాభపడ్డారు, ఎవరైతే నష్టపోయారు, ఆ డివిజన్ అనేది మనం తీసుకొని రాగలిగితే మనం ఏం కావాలంటామో అది మనం సక్సెస్ కాగలుగుతాం। అది బాంసెఫ్ వలన సాధ్యమవుతున్న ఉద్దేశంతో దాంట్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది। This present intellectual class, the young new intellectual class which is available now, unfortunately the majority of that is not with the social movement, and it is a big challenge for the BAMCEF to bring them into the BAMCEF and mobilize their potential for this transformational movement. Now if we succeed in that, I think this pace really we can increase the pace and we can reach faster. आज बामसेफ ने हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, मतलब हमारे लिए अच्छी जगह बनाई है, अच्छी भूमि बनाई है, और इस भूमि का मतलब आपके मेहनत का, बामसेफ की मेहनत का, जो अगर हम उसका फ़ायदा नहीं लेते तो हम हमारे जैसे नालायक कोई नहीं होगा, तो उसको हमें ये बताना होगा। At times, the committed young influence their older generation to get involved in the movement. My son, Dr. Vinod Pawar, and Deepa, my daughter, both of them introduced me with BAMCEF.
and they were inspired by Mr. Jane Goldar. हमारे सब युवा लोगों को ये बताना होगा कि ये आपने समझ लिया क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, अब चुपचाप बैठे तो नहीं होगा. We must make the Mulnivasi Bahujans realize that if they do not continue the Phule Ambedkarite movement and establish the ideals of liberty, equality and fraternity as the ideals of life, democracy gets devitalized. Let not tyranny have freedom to enslave. Thus, Baba Saheb Ambedkar, as a statesman and visionary, exhorted in the 1940s, anticipating dangers to democracy. If things come to such a pass, we will be doomed to Manusmriti Raj once again. Without sacrifice, social transformation is not possible. Whatever we visualize today, that is because of organizations like BAMCEF, and BAMCEF is the only organization which is exactly working for the society. ये साइंटिफिक काम है, इससे दूसरा काम नहीं है, पवित्र काम, बहुत ही अच्छा काम है. Nobody is equivalent to BAMCEF. हमको ये लग रहा है कि आने वाली दिन BAMCEF की होगी. It is now for us a time to act, and the sooner we do, the better, because every day that passes is creating more and more difficulties in our way, complicating the problems. BAMCEF is not a temporary phenomena, but a permanent source of inspiration for the toiling humanity of this land to fight against injustice, discrimination, exploitation, and an unjust social system. Come, let us take ahead this movement as our social responsibility to liberate the Mulnivasi Bahujans.